स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियली में करना क्या है कि एक स्पेस है ये, दिस स्पेस इज गिवन टू अस हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। दो प्लेट्स हमारे पास थी, प्लेट ए और प्लेट बी, और इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इट वाज ई नॉट। ई नॉट क्या है? ई नॉट इट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया, हमने इस स्पेस में इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। इट वॉज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मैंने आपको बताया था, प्रीवियस लेसन में बताया था आपको मैंने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंटेन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड व्हेन this slab is placed inside the electric field, then the molecules behaves like a polar molecule, they polarized, and these are the polarized molecules of dielectrics in which the positive charge will shift towards the negative plate and the negative charge towards the positive plate. So in this region the electric field will be E naught, and inside the dielectric electric field is induced, since the total negative charge will be shift on this side, total positive charge will be shift on this side, and electric field will be from positive to negative. So inside the dielectric slab the electric field will be from positive to negative, and this electric field is called EP. So EP is, it is electric field due to polarization of dielectric slab. अब बेसिकली हुआ क्या, when dielectric slab was introduced between these parallel plates, the electric field in this region, that was initially it was E naught when there was no slab, and when slab was introduced the electric field was EP. So inside this region the electric field will be in this direction and it is reduced, that is E naught minus EP, and this will be electric field E. So here E is, it is reduced value of electric field. So basically हुआ क्या, when inside the electric field, that is E naught, dielectric slab is placed, then electric field is induced inside the dielectric slab, that is EP, due to which the net electric field inside the region of dielectric will reduce, it will be E, and so that electric field will be reduced. अब बेसिकली हम बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, that dielectric constant is E naught over E, that is, it is the ratio of applied electric field to the reduced value of electric field.
होगा क्या कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैब है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलराइज होंगे, जब ज़्यादा पोलराइज होंगे तो ईपी ज़्यादा होगा, ईपी ज़्यादा होगा तो ई कम हो जाएगा, और जब ई कम हो जाएगा तो के ज़्यादा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज बेसिकली the ratio of applied electric field to the reduced value of electric field, that is dielectric constant, and since it is a ratio so it has no unit. That is the what when anybody asks you this question that what is the effect of dielectric on electric field, the simple answer is when dielectric slab is introduced in the inside the electric field, then the value of electric field will be reduced and the value of the ratio of applied electric field to the reduced value of electric field is said to be dielectric constant. So that was up to in this lesson. In the next lesson we will study the capacitance of parallel plate capacitor when the partially filled with the conducting slab. Thank you.